आज जैसे कि आप जानते हो हम गोवा के ग्रैंड हायट होटल में हैं। ये सेमीफाइनल है। I'm going to get you to prepare a 3-course lunch for our general manager. By 3 o'clock, I need lunch ready. आप दोनों हमारे MTV Captain Shack के फाइनलिस्ट हो। But I also have some news for the two of you. Get out of your whites और मैं आपको मिलता हूँ back at the MTV Captain Shack on Kandalum Beach. सोनिका, ग्रैंड हायट के चैलेंज में पॉइंट्स के अनुसार आप उस चैलेंज को जीत गए थे, which is why you get the first choice of whether you want to go on day 1 with more bounty and a fresher crew, or day 2 with less bounty, a tired crew, but more time for planning. Day 2. I wake up by the beach. Da da da, da da da. Okay, anyone know what first, like जैसे आपके कोई भी ideas है, कुछ भी आ रहे हैं दिमाग में, please just jot them down or tell them aloud. How do we get the singer? We've got a singer there. Music. A live jamming session a day means for an hour. जब अमी ने चार्ज लिया तो उस टाइम रात को काफी लेट हो चुका था और उस दिन का दिन ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, हमें बाहर से भी कुछ हेल्प नहीं होता। Kama, you'll be starting your bar का preparations, ingredients, chopping, हर कुछ जो भी। Bar you forget. Done. Food, Pankaj, Ali, Kama, your ये आइडिया जो था कि द शैक गोइंग लाइव, आई थिंक अल्टीमेटली आप ये देख रहे हो कि कौन शैक चला सकता है। सपना, बॉबी, कुलप्रीत, सुविधा and गिरीश, 5 of you आप मार्केटिंग के लिए जाएंगे। Basically, I was in charge of the kitchen. Kama was in charge of the bar. The rest of the crew were doing marketing. Some of them were handling the service. Done. So done. Okay. So everyone, I'll see you tomorrow. I feel like Ami has very little time. उनके पास बहुत ही कम समय है. And get a shack to open live, I think थोड़ा difficult लगेगा अमी के लिए. सुबह जब उठी, I had a rough idea कि मैं क्या करने वाली हूँ, और मुझे पता था टाइम रिस्ट्रेंट है, मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगी. So it was a crazy morning to start off with actually. Okay, so this is the ingredient list we have. वो 3 घंटे में we were trying to organize everything, setting कर रहे थे. Ingredients अभी तक आए नहीं थे, so we couldn't start working on the ingredients. वो problem थी. Don't want to mention anything about the food. What do we mention? Awesome food? Like No, something like something. What sort of food we looking at? Something. हमारा स्ट्रैटेजी एमी के लिए था कि उसने ये बताया था कि वो 2-3 स्पेशल चीजें ऐड करेंगे, यूएसपीस करेंगे। इसको स्लिम रखना ही होगा, नहीं तो हाँ, सही है। ओपनिंग टुडे, ओपनिंग कैप्टन शैक, 2-3 फीचरिंग के अंदर उन्होंने लाइव परफॉर्मेंस डाला। Now we shall begin setup. Right now हम printing करने के लिए जा रहे हैं, प्रिंट आउट निकालना है. So we'll do that और थोड़ा मार्केटिंग भी करेंगे, बॉबी और मैं. अमी को इनफैक्ट मैंने सजेस्ट किया कि हम एक गिटारिस्ट ले लें, एक गिटारिस्ट हायर करें, क्योंकि ना शतांशु ना डेमा ना राय, हम तीनों को इतना अच्छा गिटार नहीं बजाना आता. आप अपने किचन सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं. खाली इंग्रेडिएंट्स आ गए तो बोलना मैं जा रहा हूँ. हाँ, मार्केटिंग करने जा रहा हूँ. स्टार्ट. चले मैडम. चलो. Ami had sent me out to basically get some beach beds and go promote the place. Can we get 1-2 beach beds? This two here. मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मार्केटिंग का था, क्योंकि अभी टाइम है, इसलिए उससे पहले जो सेटअप है यहाँ का, हमें बेड लगाने हैं, ऊपर का डेकोर करना है, तो उसमें हम थोड़ा हाथ बटा रहे हैं. गिरी और काम मैंने थोड़ा हेल्प किया इधर उधर. उसके बाद आई डिसाइडेड कि व्हाई नॉट जस्ट गो अलोन एंड जस्ट डू द मार्केटिंग. हाय, MTV Captain Shack. We have a lot of things on offer like massages, live music, some killer bartending. Food. Yeah, food, drinks, both. Just today. See you all there. Bye-bye. I'll see you guys. Thank you. Okay, then see ya. जब मैं और सुविधा बाहर we were promoting the place, I was hoping that the produce and the ingredients that I required for lunch would come. All ingredients are coming. Everything's just coming, man. Nothing's come. 1 घंटा था खुलने को. That time I was getting a little nervous, stressed out. I didn't know how to handle it. कि इतना बहुत ज़्यादा pressure हो गया मेरे ऊपर. हम बीच पे भी चटाई बिछा देंगे. We have 13 people sitting outside, so don't add more on the beach. Add here also. Initially जब चैलेंज स्टार्ट हुआ तो मेरे को एमी काफी कंफ्यूज लगी उसको अपने कैप्टनसी को लेकर, क्योंकि किचन भी रेडी नहीं था
और मेनली उसकी वजह से काफी कंफ्यूजन था। Everyone is lazing around. See, I don't understand what is happening here. Tell me what needs to be done. Just get your plates, everything ready. Just get your kitchen like completely set. That once the ingredients come, you all can start off full on like. घंटा शायद बचा है and ingredients नहीं आए हैं. बहुत सारा सामान, बहुत सब अभी भी organize करना है. Xerox का जो marketing का होगा वो print out नहीं आया अभी तक. पता नहीं क्या confusion है. अली तो turn up ही नहीं हुआ. रेमा का तबीयत ठीक नहीं है. Everyone is doing whatever they want है. So पता नहीं कैसे चलेगा. See, I'm giving you a menu right now. Basically, we're doing omelets. Okay. Okay. Then we have fried chicken and chips, potato wedges with whatever they want. What I thought was, you know, we shouldn't wait for everything to get there, and we should just start off with whatever we have. अभी वो कैंडलम जो स्ट्रेच है वो कवर किया 300. कुलप्रीत तू एक्चुअली आजा मेरे साथ, फिर हम लोगों को लाते हैं. वो इंग्रेडिएंट्स आ गए थे, द किचन सेटअप एंड बार सेटअप स्टार्टेड. 12 बज गए थे उस वक्त. सो आई वाज गेटिंग स्टिल लाइक दैट प्रेशर दैट जितना जल्दी हो सके वी हैव टू स्टार्ट ऑफ और लोग आने चाहिए. फ्राइड 30 रुपीज़ और फिर जूस ऑरेंज पाइनएप्पल नीचे 50 रुपीज़. I got a customer. Hello. Would you like to chill at our shack? Water? Okay, I'll get you some water. I'll go to the kitchen and get it. Nice one, Pankaj. Before actually we opened the shack, there was this lady who wanted some water. So I just took a bottle of water that was kept right there and I sold it to her for 50 rupees. You know, it was the first sale of the shack and it was fun. Pina colada is ready or what? You're making a pre-mix? नहीं. ऐसे ही बना देगा ना? हाँ. Finally हमारे पास करीब 12, 20, 12:30 बजे तक ingredients आए. Then it took me around half an hour to set up everything. जब मैंने ओपन साइन वो टंगा फाइनली, ऐसे लगा कि फाइनली वी आर स्टार्टिंग एंड आई वाज स्टिल लाइक बहुत एंग्शियस थी कि अभी जाके लोगों को लाओ. आई वाज जस्ट वेटिंग आफ्टर दैट बट आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी, ग्लैड दैट फाइनली इट्स ओपन. फाइनली एक कस्टमर आया था एंड उसने एक मॉकटेल ऑर्डर किया एंड आई वाज लाइक यस इट्स अ स्टार्ट, यू नो, जैसे एक मॉकटेल का ऑर्डर था. Cool, so you're gonna play music now, ना? So जब टाइसन को हायर किया was actually pretty fabulous. हम सब you know we started kind of picked up from there. पहले बहुत slow था थोड़ा. फिर एक और लड़की आई थी. So then it started feeling good कि अच्छा लोग आ गए and now we have started business and अभी try करो कि कितने और लोग आ सके. So that was our next aim. Sweet lemonade and just getting the water. Thank you very much. The bar menu was good. That kept everyone happy. So means even after getting delayed for a while, didn't lose much of the business. Okay, I'm gonna have the nachos for sure. What are you having? Burger. And the fried chicken. Fried chicken and chips. Lovely. Thank you. जब guests आने लगे, after that everyone जो floor पे थे, everyone was helping out. And I think the floor managed very well. And I think the service भी बहुत अच्छी थी. I was excited to actually cook the food on the first day because I was supporting Ami. I knew that she would be a good owner and she would run the shack very well. Two pina coladas, please. Prashant, food pickup. Fried chicken and chips. Food orders, drink orders काफी आ रहे थे. So it was going pretty well at many moments. I was definitely working hard क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि लोग मेरे को पलट के बोले कि तुमने एक partial behavior दिखाया है अपने performance को लेकर. The food was really good. Food was really nice. I think there's the potential for the shack to be very successful. So fingers crossed. मैं और ऐश्वर्या म्यूजिक प्रोवाइड कर रहे थे इस चैलेंज में और हम दोनों का काफी अच्छा सिंक था. जब हम शैक पे थे तो ऑब्वियसली थोड़ी जनता की कमी थी, तो इसलिए हमने सोचा कि यू नो एक और बार मार्केटिंग करने की ज़रूरत है. ये मेरी जान मिल गई हमारे को. ये हमारे को दिल्ली एयरपोर्ट पे मिले थे और ये हमारे साथ अब हमारे शैक पे जाएंगे. तो ऐसे सिंगे हिंदी सॉन्ग गोरो की न कालो की. यू सिंग. गोरो की न कालो की ये दुनिया है दिल वालों की. I don't know, it was madness. They were both singing some song in their own languages. बहुत मजा आया. It was quite a lot of fun.
ओवरऑल थोड़ी देर के बाद टुवर्ड्स द लेट आफ्टरनून फ्लो अच्छा आया। शाम को भी अराउंड 3-4 o'clock क्राउड अच्छा पकड़ लिया था हमारे शैक पर। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी। जब कैप्टन और निखिल आए उन्होंने शैक का माहौल काफी बदला। एक पॉजिटिव वाइब आ गई, एक एनर्जी आ गई शैक पर। स्पाइसी कोला, कैप्टन कोला। काफी अच्छा चल रहा था, much better than what I expected afterwards morning से। I was very happy. Good. I like it. Good. Oh yeah, that's fun. That's like a chapati. अभी वेकेशन पे आया और ऐसी चीज़ मिल जाए तो वो बस वो जो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, वो काम हो गया। तो शाम हो गई थी and it was like the sun had just set, so I thought I'll do a flare show now before शैक बंद हो जाए। And I had a lot of fun. It was like, chalo, the last time I'm going to be flaring now, and you know, challenge or you know, this is for my shack. So. I think everyone enjoyed it a lot. बहुत छोटा था, but it was a nice ending to the whole thing. At the end of the day, the overall involvement of all the crew members and all the feedbacks of the people, the business which we did, I guess for being a captain, it was good on her part, and she did pretty well. Let's get the volume up as high as possible. Turn me up. Can you hear that? I think the best guest मुझे लगा वो drummer था. It was very good क्योंकि उसने एक बहुत अच्छा vibe add किया. He played and he played very well. So some very good drumming. We were just jamming like random, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी गा रहे हैं. But I think on the whole, it was the best thing ever. Captain really added flavor to the environment, for sure. End में उन्होंने गाना बजाया and he made up a song and he sang very beautifully. First time हमने कैप्टन का talent music के अंदर जैसे देखा था, so. Everyone was just happy. Everything ended perfectly. It was done. It was end of day one, and it was a good ending. Yeah, from where it started till where it got, it was fantastic. Awesome, dude. That sounded great. Good job. Good job. Good job. End of day one of the first day. जब MTV Captain Shack live गया, live customers, live service, live food. Ami and Ami's crew, well done. मैं आप सबको कुछ समझाना चाहता हूँ. MTV Captain Shack को कोई सिर्फ एक व्यक्ति जीतेगा, या तो अमी, या तो सोनिका. मगर मैं जानता हूँ कि ये शैक इस साल 2012 में is going to be one of the most popular spots on Kandolim Beach. और इसकी वजह अमी या सोनिका नहीं होगी. इसकी वजह होंगे आप सब. All 15 of you are going to do something and have done something on the show to give the shack its personality and to make it into a success story. And I think you should all be proud of yourselves, really. Ami, आखिरी में आपसे पूछते हैं. आप पहले भी कैप्टन रह चुके हो, but this was the first time that you were a captain of a live running shack. Are you proud of your crew? Yeah, very proud. Ami, come forward. Rumor has it that you actually made bounty today. Money. Yeah. Give it to me. I will take this now and we will reveal how much it is tomorrow. Okay. Well done. Thank you. All right. Go back to your ship. आप सबको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ that this is not a competition on who makes more money. Each and every one of you is being watched constantly. और जो overall MTV Captain Shack का experience होता है,
along with how much money you make as well. सब कुछ माना जाएगा to decide who is going to be the ultimate winner of the MTV Captain Shack. So crew, please get some rest tonight. Give each other some back massages. Sonika is going to have a tough day tomorrow. And for all of you, it'll be even tougher because it will be your second day here at the live MTV Captain Shack. We'll see you tomorrow. See you. Bye-bye. इस बार मुझे एक पूरा दिन दिया गया where I was alone and I had to think of something that Ami could not have thought of in the few hours that she got. How are you? Tired? Aishwarya tired? Anybody here tired? नहीं, जगह मेरे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन था who is going to really help me genuinely और किसको मूड नहीं है हेल्प करने का. क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप लोग ने आज क्या क्या किया? मतलब who was doing what? Or if it matches with my list, so... You know what, I'll tell you what. I was singing. One second, let her read her list out and then we'll say yes or no according to her list. Chefs, I don't need to name. I won't be cooking, yeah, it's nothing personal honestly, but I won't be cooking tomorrow. I'll help you out wherever else you want. क्या झटका लगा मेरे को. I was like, क्या होने वाला है? ये क्या क्यों कर रही है मेरे साथ यार? मैंने क्या बिगाड़ा इसका? I think Ali and Sonika tried to get rid of me in the earlier eliminations, not for the right reasons. So you know, it's karma basically. So that's why I thought to myself, you know, why should I try and help her when I can let Ami win easily? अगर आप एक प्रोफेशनल कुक हो, तो आपको you should stick to your professionalism. मैं अगर होता तो मैं इसको गाली देता था उसको. आपको पता है ना कि even you know how to cook, right? Who, me? Yes. Yeah, I know. तो आप करोगे? हाँ. हाँ? Aman, will you do it? Yeah. Completely disaster because मेरे को रसोई में completely अंदर जाना पड़ा. वो भी उस बंदे के साथ जिसको मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ because वो मेरे को दिमाग से थोड़ा पैदल लगता है. What would you like to do, Pankaj? I don't want to see the kitchen tomorrow. You won't even give me recipes. That I can do for you. Why? That you can do. What was the hit food item क्या था? चिकन बर्गर काफी निकला. चिकन बर्गर. प्रॉन भी अच्छा गया. आप लोग के हिसाब से मिस्टेक्स क्या था? एक साथ ही सब एक बार मंगवाना. That 24 hours I went thinking of how I'm going to use every element. One. And two, obviously convince the crew to tell me what the biggest mistakes were. एक मेन्यू फिक्स रहे तो कोऑर्डिनेशन में आसानी रहेगा क्योंकि आज हम लोग चेंज कर रहे थे लास्ट मिनट. ये नहीं है, वो है, वो नहीं है. लास्ट मिनट वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे तूने बताया अगर इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी अच्छा है, कंटिन्यूअसली change the menu like. हाँ, चेंज मेन्यू चेंज हुआ. ब्लैंक कार्ड में हम लोग चेंज किए थे. This wasn't a time to take chances. ये final challenge था और I didn't want to go wrong anywhere. Chefs basically Ali Aman. Management Shashank and Suvita. Drinks Kama और Girish. Aishwarya, Bobby, Dema, Sapna. You all know what you all are doing. Marketing, entertainment, service. Compared to Emi और सोनिका के planning, मेरे को सोनिका का planning अच्छा लगा. She had done a homework where वो exactly वो she knew कि कौन क्या काम करेगा. Okay guys, कल आप पे depend करता है. मेरी जीत आप पे depend करता है. Full power. Full power. Full power. Yeah. Thanks. चल, see you all tomorrow. Come on. Seeing her confidence and her confidence in us, that was the major part. We thought that okay, Sonika will be a great captain and we'll have a much smoother day next year. कितने लोग कितने सपने सपने रहे अधूरे. Wildstone presents the Wild Quotient. Which contestant do you think is the wildest one on the show? A. Pankaj, B. Ali, C. Ami, or D. Sonika? SMS Wildstone space your option to 56882. And if your choice gets the maximum votes, you could win exciting gift hampers from Wildstone. It happens.